डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स में एंथोसीरोज का पार्ट 2। पहले हमने पार्ट 1 में आधा पोर्शन इसका लगभग लिया है। पहले की स्लाइड में हमने बताया जैसा कि इस तरह का ये आपका सिलेबस है, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये एंथोसीरोज। ये इस तरह की संरचना होती है। गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, ये ऐसी संरचना है जिसमें आगे चलकर ये स्पोरोफाइट्स संरचना लैगिंग स्पोर्स बनेंगे। इस तरह से एंथोसीरोज है। इसकी तुलना में अगर देखें तो ये मार्केंशिया था, ये मोसेज हैं जो कि हायर ब्रायोफाइट्स से मसाई ग्रुप के हैं। जहाँ तक रहा मामला जनरल कैरेक्टर का, ब्रायोफाइट्स लेक वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, लेग्स, roots, leaves, have rhizoids, absorb water and nutrients from the soil surface। ये इस तरह से इनके कैरेक्टर्स थे। और ये जो हम एंथोसीरोज पढ़ रहे हैं ये हॉर्नवर्ड ग्रुप कहलाता है। ये स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स है, लगभग 100 प्रजातियाँ हैं। मोस्ट कॉमन एंथोसीरोज है। स्पोरोफाइट जो है इसका हॉर्न के जैसा शेप है। फोटोसिंथेटिक सेल में हर सेल में एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसमें म्यूसिलेज कैविटी भी देखी गई है। ये इस तरह से इसके एंथोसीरोडोप्सिडा के कैरेक्टर्स है जो हमने पहले की क्लासेज में लिए हैं। कि किस तरह से गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, राइजोइड्स कैसे हैं, सेक्स ऑर्गन्स थैलस में धसे हुए हैं। ये सारे कैरेक्टर्स हमने पहले की क्लासेज में लिए हैं। ये इसके हैबिटेट वगैरह का है। दैन इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये भी हमने पहले की क्लासेज में लिया है कि आपको वापस रिवीजन की फॉर्म में बताते हैं कि किस तरह से इसकी ये संरचनाएं हैं और कैसे इसमें एंडोफाइटिक जो एल्गी है वो भी इसमें देखी गई है नॉन स्टॉप। ये इम्पोर्टेंट फीचर है। देन फिर हम इसके लेंगे गैमेटोफाइट की संरचना, बाह्य संरचना किस तरह की है। देन सेक्शन काटने पे कैसा दिखाई देगा। इसका थैलस है, ये इस तरह से थैलस जो हमने पहले की क्लासेज में लिया है कि डोर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, और ये इस तरह के राइजोइड्स यहाँ पर है। ये ऐसे सेक्शन काटा स्पोरोफाइट का, ये संरचना दिखी। देन इसके रिप्रोडक्शन की टाइप्स लिए हमने कि वेजिटेटिव और ट्यूबर्स के द्वारा होता है। देन फिर अब हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये वाला मेन टॉपिक है जहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं। पहले हमने अभी तक पढ़ा हुआ है द एंथीडियम, डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम। द एंथीडियम आर प्रोड्यूस सिंगली और इन ग्रुप्स विद इन द closed cavity is known as the enthedial chamber. The development of enthedium is endogenous. Endo means under. A dorsal superficial cell of the thallus situated near the growing apex divide periclinally यानी कि परिधि के साथ साथ, giving rise to two daughter cell. The upper daughter cell act as the roof initial, roof मतलब छत, and lower one act as the enthedial initial. Lower one act as the enthedial initial. The enthedial initial thus endogenous, अंदर की है इसलिए इसको कहा गया है endogenous rather than the superficial as another. Eventually a mucilage filled space appear in between the roof initial and enthedial initial. This mucilage cavity enlarges in size and ultimately becomes the enthedial chambers. Ultimately becomes the enthedial chamber. Simultaneously, the enthedial initial develops into a single enthedium and a group of the enthedia. A single enthedium develops in so and so species. According to Mehra and Handoob and Anthoceros erectus, a number of enthedia develop in a enthedial chamber. Hence, the enthedial initial divide many times anticlinally यानी कि परिधि के विपरीत and producing many cells, and each cell thus produce a enthedium. Further development of enthedium is as follows. The enthedium initial divides into the twice by the vertical wall
intersecting into, अभी डायग्राम भी लेंगे इसका, intersecting into each other at right angles giving rise to the four cell. This is followed by the another transfer division giving rise to the two tier of the four cells each. ये वाला डायग्राम जो हम कर रहे हैं कि इस तरह से ये सेल्स है, ये डिवाइड होगी इसमें, फिर ये डिवीजन हुआ, ये इस तरह से हम इसको समझाने में भी वापस लेंगे. Form a multicellular stalk of the Anthidium. The cells of the upper type form the body of the Anthidium, and the four cells of the upper type divide transversely, giving rise to 8 cells, and thus octant structure. All of the cells of the octant cell divide periclinally, give rise to the 8 outer primary and the 8 inner primary cells. इसकी हम बात कर रहे हैं. ये वाला जो सेल्स है, ये डिवीज़न हुआ यहाँ पर, और ये इस तरह से डिवीज़न होके ये आउटर सेल ने ये वाल सेल बनाई, और इन्होंने अंदर वाली ने एंथीडियल सेल्स का कार्य करा. ये वाला कह रहा है, इसे ये शेयर हुई, या डिवीज़न में 2, फिर ये डिवीज़न हुआ, फिर ये हुआ, फिर इस डिवीज़न के इसके अंदर जो ये डिवीज़न हुआ, इस तरह से पेरिक्लाइनल जो ये हो के बाहर की ने ये बनाया है, और नेक्स्ट अंदर वाली ने ये बनाया है. ये हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर. Octant cell. All the cells of the octant divide periclinally, give rise to the 8 outer primary jacket cells and 8 inner primary endomorphic cells. The outer primary jacket cell divide anticlinally, forming a single layered jacket. The primary endomorphic cell divide repeatedly to form a mass of endocyte mother cells. Each endocyte mother cell divide diagonally, producing the 2 endocytes. जो diagonal division जो आपके है वो भी बताएंगे. इसमें डिवीज़न है वो तिरछा रहेगा, अभी सेल्स का हम बताएंगे. तो वह डायगोनल फॉर्म में रहता है. डायगोनली प्रोड्यूस द 2 एंडोसाइट्स. ईच एंडोसाइट मेटामॉर्फोसिस इनटू ए स्पिंडल लाइक बाइसीलिएट. ध्यान रखें, सीलिया 2 है उसमें प्रेजेंट, एंथेरोजोइड का निर्माण करता है. ये इस तरह से ये इस तरह से बाइसीलिएट एंथेरोजोइड का फाइनली ये निर्माण हुआ है. ये करना हम चाह रहे हैं. Then structure of mature Anthidium and its division. The mature Anthidium is a stalk club shaped. The stalk of Anthidium consists of a mass of the cell. ये वाले club shape गदाकार का ये होता है. ये गदा देखिए आपने हनुमान जी की मूर्ति में, उस तरह का ये फॉर्मेशन है. On maturation, the Anthidium roof of the Anthidial chamber disintegrate with itself, and Anthidia are exposed to outside. Soon after, the Anthidia absorb water and burst their apical cell, giving the way to Anthizoid to move outside. मतलब ऑन द मैचुरेशन पे जो एंथीडिया चैम्बर होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और एंथीडिया एक्सपोज होके बाहर की तरफ वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और बर्स्ट होके इस जगह से फिर ये एंथीरोजोइड्स जो है वो फ्रीली मूव कर जाएंगे. The antherozoid is spindle-like cell and biciliate. The cilia attach to the anterior end of the body. The antherozoid swims in the water with the help of their flagella. And अब ले रहे हैं आर्चिगोनियम का. आर्चिगोनियम, डेवलपमेंट ऑफ द आर्चिगोनियम. आर्चिगोनिया अराइज. आर्चिगोनियम सिंगुलर है, यम जहाँ लग रहा है IUM, और ये प्लूरल शब्द ध्यान रखें, आइया. Archigonia arises in an acropetal sequence on the dorsal surface of the thallus. The development of the archigonium also begins from a single superficial cell. The cell becomes prominent and acts as the archigonial initial. The archigonial initial divide by a transverse wall to form the outer primary archigonial initial and the inner primary stalk cell. But according to so and so worker, the archigonial initial functions directly as a primary archigonial cell. The primary archigonial cell by 3 intersecting periclinal division. ध्यान से सुने इसको. The primary archigonial cell by 3 intersecting periclinal division producing a 3 jacket initial which surrounds an axial cells, and axial cells divide transversely. Axial cells divide transversely to form 2 cells of almost equal size. The lower one becomes the primary ventral cells, and the upper cell divide again
forming a top cover initial and a lower primary canal cell. The lower one becomes the primary ventral cell, and the upper cell divide again, forming a top covering initial and a lower primary neck canal cell. Neck canal cell divide repeatedly and producing a linear rows of 4 to 6 neck canal cells, and the primary ventral cells divide transversely to give rise to the two cells, upper a ventral canal cell and a lower an egg cell. ये इस तरह से है स्ट्रक्चर बच्चों। इसमें ये वाली हम बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये कवर सेल बनी, ये वाली सेल जो है इस कवर सेल के नीचे की ये कहलाएगी नेक कैनाल सेल, ठीक है। और ये एग सेल के जस्ट ऊपर की सेल जो है ये कहलाएगी वेंटर कैनाल सेल। शब्दों का माइन्यूटली सा अंतर है पर ध्यान रखें, ये वाली एग सेल है, एग सेल के ऊपर की सेल जो कहलाएगी वेंटर कैनाल सेल कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ये जो है ये नेक कैनाल सेल है। और ये जो कवरिंग वाली है ये तो अंडरस्टूड है, ये कवरिंग है, ये कवर सेल्स कहलाएगी। इस तरह से मैच्योर आर्चिगोनियम में कैसे बनी ये तो हमने दिखा दिया आपको मैच्योर आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर, और ये कैसे बनी ये इस तरह की संरचना है। ये आर्चिगोनियल इनिशियल का कार्य कर रही है, ये सेल्स, फिर डिवीज़न हुआ ये, फिर ऊपर से देखेंगे तो इस तरह का डिवीज़न दिखाई देगा, सरफेस व्यू जिसको हम कहेंगे। फिर प्राइमरी ये है और ये वाली जैकेट इनिशियल सेल, ये कवर सेल्स है। देन फिर डिवीज़न हुआ ये इस तरह से, फिर ये वाला संरचना ऐसे फाइनली बनी, और ये रही एग सेल, ये वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल और ये कवर सेल। इस तरह से मैच्योर आर्चिगोनिया के अंदर ये वाली स्थिति रही। और यहाँ पर ऊपर म्यूसिलेज का क्लाउड होता है, लसलसा पदार्थ जो होता है उस तरह का है, तो ये फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल रहेगा इस जगह की वजह से, ये ध्यान रखें। ये इस तरह से हमने इसको समझाया मैच्योर आर्चिगोनियम में किस तरह से म्यूसिलेज क्लाउड है, ये जो है ये इस तरह से हमने आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट बताया। ये वाला जो संरचना मेन है, ये जो फर्स्ट सेल जो है इनिशियल सेल कहलाएगी, इसमें ऐसे डिवीजन हो गया। ये सरफेस व्यू है, ऊपर से हम जब देखते हैं तो वह इस तरह की संरचना की फॉर्म में दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस व्यू। और ये जो संरचना हम बताने का और कि ये सराउंडिंग ये वाली है हम जो कर रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझ में आ जाएगा। द मैच्योर आर्चिगोनियम इज embedded in the dorsal surface of the thallus, but the cover cell protrudes above the surface of the thallus. The neck is composed of the 6 vertical rows of the neck cell, and narrow cavity of the neck is occupied by a row of the 4 to 6 or more neck canal cells. The lower solar venter end contains a large egg and relatively small venter canal cell. इस तरह से ये वाला संरचना है। On the maturation of the archegonium, the venter canal cell and neck canal cells become gelatinized. Thus, a mature archegonium is flask-like in shape without neck canal cell, venter canal cell, and with an egg in its venter. At the tip of the archegonium, there are 4 cover cells. Fertilization and syngamy. Prior to fertilization, the cover cell present at the tip of the archegonium get separated. The neck canal and the venter canal cell become gelatinized, forming a mucilaginous mass. The mucilage collects at the tip of the archegonium. The anthozoids are attracted chemotactically. Through the medium of the water, many anthozoids enter the mouth of the archegonium. Ultimately, one anthozoid penetrates the egg and fertilization takes place. The male and female nuclei unite to each other, producing a zygote. Zygote is diploid, and this is the beginning of the sporophytic stage. Sporophytic development of sporophyte. After fertilization, the zygote secretes a cellulosic wall, surrounds it and enlarges and completely fills the venter of the archegonium. The first division of the zygote is vertical. अभी इस तरह से ये हम बात कर रहे हैं, जो अभी डायग्राम से और आसान रहेगी। ये इस तरह से जाइगोट बना, ये फर्स्ट डिवीजन इसका वर्टिकली हम करने चाह रहे हैं।
ये वाला। The first division of the zygote is vertical, but in the certain cases it is the transverse. With the result of the first vertical division, two almost equal daughter cell is produced. The two cells now divide. Transversely forming the four-celled embryo, these four cells may be the equal in size or the upper two are larger. These cells again divide vertically, developing the eight-celled embryo, the end embryo, the octant. In the octant state, the arrangement of the two tiers of the four cells is further development of the sporophyte show variation in the different species. The cells of the upper two tiers give rise to the capsule, while the other lower tiers give the foot. The cells of the embryo destined to give rise to the two divide regularly or irregularly, many times producing the bulbous foot, which is made up of the thin-walled vacuolized cells. The lowermost cells of the foot give rise to the short rhizoid-like projection, increasing the absorptive surface for sucking food from the gametophyte for the developing sporophyte. The cells of the upper tier of the embryo, which are destined to give rise to the capsule, divide periclinally, separating out the central part of the endothecium from the outer, the amphithecium. The whole endothecium gives rise to the sterile columella and young sporophyte. The columella consists of the four vertical rows of the sterile cells, but later on it is made up of the 16 row of the cells. इस तरह से ये बताया. The jacket initial divide again and again periclinally, producing the six-layered wall of the capsule, the outermost wall developing into a single layered epidermis. The epidermal is the cells are the cutinized regular stomata with guard cells occur on the epidermis. The inner cells of the jacket are the parenchymatous and usually contain the two chloroplasts in place of the single chloroplast of the gametophytic cells, but this number may vary. These chloroplast cells, however, help in the synthesizing the food. The inner cell of the amphithecium becomes the archisporia, which overarches the rounded apex of the columella, and many may or may not extend the base of the columella. Subsequently, the archisporia layer divide periclinally, and thus mature capsule has the two or more layers, archisporium and sporogenous tissues. The mature in the basipetal sequence. At maturity, the archisporium or sporogenous tissue differentiated into two types of the cell. The sporophytes, number 2, sterile cells, which are smaller in size and comparatively small nucleus. The two types of the cells are almost equal in numbers and are arranged in the regular alternative rows in the young capsule. But it is very interesting, as the capsule matures, the spore mother cell undergoes the reduction division, which producing a spore tetrad. The sterile cells soon divide obliquely and transversely, producing a four-celled simple or branch electors, which lose their protoplasmic content when matures and remain in the wall. The electors of the anthoceros do not have the thickening band, and this is called the pseudo-electors. The pseudo-electors help in the dehiscence of the capsule and behave like a true electors. In earlier stage, their functions seem to be nutritive. The apical growth of the sporophyte ceases after the differentiation of jacket. Archisporium and columella in the capsule. At this stage, the intercalary meristem differentiated the base of the capsule, and this meristem is responsible for the further growth of the capsule. The young sporophyte of Anthoceros is covered by the protective sheet, the calyptula involucre. The mature sporophyte is elongated structure present in the dorsal surface of the thallus. The capsule arises from the thalli in the form of the small horn structure. Usually they are the 2 or 3 centimeters long, but in some species they range from the 5 to 15 centimeters. The collar-like involucre surrounds the base of the sporophyte. The young sporophyte is green in color, but at maturity usually turns dark yellow. There is no distinct seta, but an intercalary meristematic zone is present in between the foot and the capsule. This meristem continuously adds new tissue of the capsule from the base. The internal structure of the base bulbous part of the sporophytes is composed of a vacuolated parenchyma cells and known as the foot. In some species, the superficial sheet of the foot are palisade-like.
Capsule wall is composed of the 4 to 6 layers of the parenchyma cells. The outermost layer, which forms the epidermis, is composed of the elongated cells. The stomata open in the intercellular space of the chloroplast cells. Usually, each cell processes two chloroplasts. Thus, the sporophyte is capable of the main line जो हम कर रहे हैं. Thus, sporophyte is capable of synthesizing food by itself. However, the sporophyte remain dependent on the thallus for the supply shallow grooves in the epidermis. The capsule dehiscence along with these grooves in between the jacket and the columella is the cylindrical or the archisporial zone or sporogenous tissue. It also helps in the dispersal of the tissue. In contrast to liverwort, the sporogenous tissue in Anthoceros or arches the columella like a dog. The archisporium matures in a basipetal sequence. Columella is the central sterile part of the capsule extending almost to entire length. It is composed of the 16 vertical rows of the thick wall elongated. The main function of columella is to provide the mechanical support to tender and elongated capsule. किस तरह से फिर dehiscence होता है कैप्सूल का ये देते हैं बता रहे हैं इसमें. On maturity, the tip of the sporogenous cells becomes yellow, black and dark brown in color. The dehiscence of the capsule is more or less dependent upon the loss of water. This way, dry atmosphere also help in the dehiscence of the capsule. Initially, the walls remain attached at the tip, but as the wall dry and twist, they separate from each other, exposing the spores and elater. Hygroscopic movement of the pseudo-elaters release the mature spores at the top. Liberated spores are dispersed by wind from the one place to another. इस तरह से ये इसका स्पोर का डेहिसेंस जो होता है वो हम बताया है. Then फिर the spore and its germination. The haploid spore is the mother cell of the gametophytic phase. In earlier stage, the spores are found to be arranged in the tetrad. इस तरह से tetrad में arrange होता है earlier stage में. After being separated from each other, they are dispersed. Each is somewhat spherical and possesses the two layers. And outer wall is exine and inner wall is intine. Intine is small, smooth and thin, whereas the exine is somewhat thick and ornamental. ये बाहर की wall जो है thick और ornamental है इस तरह. The color of the mature spore varies from species to species. Each spore possesses a single nucleus, colorless. The spores germinate either immediately or after their liberation. Anthoceros ये वाला स्ट्रक्चर है इसका. यहाँ से ये ट्यूब निकली, देन फिर ये आगे की स्टेज रहेगी, ऑक्टेंट स्टेज है. फिर इससे पहला राइजोइड्स निकला, फर्स्ट राइजोइड्स, देन ये एपिकल मेरिस्टेम. डेवलपमेंट ऑफ यंग गैमेटोफाइट. The content of the spore migrate into the germ tube. The colorless plastid, ये इस तरह से ये इसके कंटेंट है, ये इस germ tube में गए. कहने का मतलब ये है. The colorless plastid of the spore turns green in the germ tube. The successive transfer division of the differentiated two cells at the tip of the germ tube. Both the cells divide into two vertical cells at the right angle to each other, forming a 8-celled octant at the tip of the germ tube, and this 8-celled structure is known as the sporeling. The 4 distal cells of the octant function as the apical meristem. The activity of these cells result in the formation of a new gametophyte. तो इस तरह से ये वाला जो हम करना चाह रहे हैं ये स्थिति है, और ये आगे चलकर नया गैमेटोफाइट ये बनाएगा, जिसको हमने यहाँ लिखा है. एंथोसेरो स्पोर एंड इट जर्मिनेशन स्पोर विद द ट्राइरेडिएट्रीज, जर्मिनेशन स्पोर प्रोड्यूसिंग ए जर्म ट्यूब, एंड फर्दर स्टेट ऑफ द स्पोर जर्मिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू थैलस एंड फर्स्ट राइजोइड्स. ये आगे हायर क्लासेज में आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं. सिंह पांडे जैन बाई रसल पब्लिकेशन से, बीपी पांडे एस चांद से निकलते हैं. एक गांगुली कार है जो वेल इस्टेब्लिश पुरानी बुक है, काफ़ी न्यू सेंट्रल बुक है, ऐसी कैलकाटा की. रसीद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनकी इंट्रोडक्शन टू ब्रायोफाइट्स. इसमें बेसिकली ब्रायोफाइट के टिश्यू कल्चर स्टडी पे काफ़ी डिटेल में दे रखा है. देन एन एस परिहार है, सेंट्रल बुक डिपो इलाहाबाद की,
उसको भी आप फर्दर स्टडीज़ में देख सकते हैं। ये इस तरह से पूरा इसकी समरी रही जो कि लाइफ साइकिल कह सकते हैं। अगर आप इस तरह से लाइफ साइकिल फॉर्म में लास्ट में याद रखें तो वो पूरा रिवीजन में भी ये आसानी रहेगी और आराम से इसको बारीकियों से पढ़ें। इस तरह से पूरा समरी आ गई कि कैसे तो थैलस है, डिवीज़न हुए, देन फिर क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, फिर ये सारा इसमें इस तरह की स्टेजेस सारी आएंगी तो उससे रिवीजन में आपको हेल्प रहेगी। थैंक यू।